All right, we are going to install Flutter on Mac machine. तो सबसे पहले आप Google पे जाके Flutter download का option टाइप करेंगे, and when you search this option Flutter download, you will come to see this option Flutter install. This one install Flutter. If we click it here, तो यहाँ पर से मैं Mac OS choose करता हूँ, and on this Mac OS if we just scroll it down, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, Intel based Mac और Apple based, based on either you're using Intel or either you're using Apple based, I mean M1 chip or M2 chip. So based on it, like I'm using M1, so I'm just choosing this Flutter Mac OS ARM based, and I just click it here. So this would be get downloaded. So when I click on the save, it is going to download this thing, right? So it is going to download this, and it takes some time. Finally, it is get downloaded, and it is in my downloads folder. तो मैं इसको यहाँ से I just do copy this thing. तो मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, and I just go to this my documents folder, and in this documents folder I just go to the folder, and here I will give a name called softwares. तो मैंने एक softwares नाम का एक folder यहाँ पर create किया, and in this softwares folder I simply paste it here. यहाँ मैं इसे paste कर देता हूँ, और इसे this is the Mac OS based Flutter, and if you see 950 almost 1 GB के आसपास है. So we just double click, और डबल क्लिक करते ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फोल्डर, राइट? सो दिस विल बी गेट एक्सट्रैक्टेड. So it takes some time to extract it. Here it is get extracted. If you open it, तो आप यहाँ पर जाके देखोगे तो it has a bin folder, and inside this bin folder it has the flutter command and as well as the dart command, as well as कैशे के अंदर जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर dart SDK पूरा इंस्टॉल्ड है. I mean if you open it तो dart पूरा यहाँ पर मिल रहा है, तो flutter के साथ हमें dart मिल जाता है. Now we need to just set this path. तो हमारे पास फ्लटर बिन तक का, दिस बिन फोल्डर तक का पाथ, वी नीड टू जस्ट कॉपी दिस पाथ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ से वी जस्ट डू दिस राइट क्लिक, एंड वी हैव एन ऑप्शन ऑफ, तो यहाँ पर मैं जैसे ऑल्ट की प्रेस करता हूँ, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कॉपी बिन एज अ पाथ नेम. तो आई जस्ट कॉपी दिस पाथ. इस पाथ को मैंने कॉपी किया, आई नीड टू सेट दिस पाथ, बिकॉज जब मैं इस पाथ को सेट करूंगा देन फ्लटर विल बी अवेलेबल इन माई मशीन. नाउ टू सेट दिस पाथ, मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ. तो वी आर ओपनिंग माई टर्मिनल. सो दिस वन इज टर्मिनल. यहाँ से मैंने टर्मिनल ओपन किया अपना, एंड फ्रॉम दिस टर्मिनल वी आर हेयर, एंड इन दिस फ्रॉम दिस टर्मिनल ऑनवर्ड्स मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, सो इट विल बी इजी टू सी. तो टर्मिनल मैंने यहाँ पर ओपन किया, एंड इन दिस टर्मिनल आई एम गोइंग टू राइट दिस नैनो. तो नैनो इज एन एडिटर हेयर, and I need to open this ZSHRC, right? So I need to open this shell. So once this shell is get open, I need to do export path. So I specify export path equals to and dollar path if we have, और उसके साथ मुझे स्पेसिफाई करके आना पड़ेगा द पाथ ऑफ माई फ्लटर, कि जहां पर से मैंने फ्लटर का पाथ कॉपी किया था. यहां से जो मैं पाथ दे रहा हूं, तो आई जस्ट पुट इट हियर inside this double quotes, and then I specify this colon, right? This colon here, right? And then I paste my path, और मैं यहाँ पर से paste कर देता हूँ, not this one. I need to paste this path, particularly this one. bin तक का path था, we just do right click and then I press alt, and we have this copy bin as a path name. यहाँ से we jump to this terminal option. This is the terminal option, and from here onwards I just do colon first and then I paste this path. यहाँ से path paste करते हैं, डबल कोट में से डालते हैं, and here is your path is set. और अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो we need to control X to exit. So I just do control X and press Y to yes. Now this path is set here. Now I need to type this command flutter doctor. So if the flutter, right now it is saying flutter is not found, so we just close this thing, and again we need to just open a new tab. तो मैं यहाँ से एक new tab open करता हूँ. Let's say I just use Pro, and from here यहाँ से हम फिर से टाइप करते हैं flutter, and we specify flutter doctor. Okay, it is saying allow this command. Okay, we are saying, and now it is going to
it is actually scanning the things and it is resolving the dependencies. So it is asking you need to install the Git. So we click on this install and we do agree this thing. और यहाँ से वो क्या करेगा Git, because Flutter की चीजें जो आएंगी वो it is coming from the Git. So that's why it is installing the Git. तो वहां से वो Git को install कर देगा, right? And now it is scanning my machine and it is telling me you do not have Android Studio, you do not have even Chrome in the machine. VS Code you have already, right? So it is asking for कि आपको Chrome install करना है and Android Studio I need to install, right? As well as Xcode. अगर मैं iOS डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो I need to install Xcode. So right now Xcode को हम एक इस टाइम के लिए ऑप्शनल छोड़ देते हैं. We just pick Android Studio. तो Android Studio Xcode का सेटअप है अराउंड 12 GB के आसपास का सेटअप है. सो वी फोकस ऑन द क्रोम एंड एंड्रॉइड स्टूडियो. ये दो चीजें मुझे चाहिए. तो फ्रॉम हेयर आई जस्ट डाउनलोड क्रोम. तो वी स्पेसिफाई क्रोम डाउनलोड ताकि वो इसे ब्राउजर पे भी चला पाए आपके एप्लीकेशन को, क्योंकि फ्लटर में जो एप्लीकेशंस बनती है वो वेब पे भी चल सकती हैं, वो मोबाइल ऐप्स पे भी चल सकती हैं और वो डेस्कटॉप पे चल सकती है. दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग कि आई नीड अ क्रोम ब्राउजर. तो यहां से इसे डाउनलोड कर लेते हैं. तो दिस विल बी गेट डाउनलोडेड. इसे सेव कर देते हैं. एंड ऑल्सो वी नीड टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो ताकि हम एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर पाए. तो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, एंड यहां से हम एंड्रॉइड स्टूडियो को भी डाउनलोड करके आ सकते हैं. अब अगर आपको iOS बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो यू नीड टू डाउनलोड Xcode, राइट? तो आप यहां से आप Xcode डाउनलोड कर सकते हो. Xcode 15 इज द बीटा रिलीज पे है अभी Xcode 15. तो फ्रॉम हेयर आई चूज Xcode 14 एंड इट इज आस्किंग टू ओपन एन ऐप स्टोर. और यहां पर आपको अपना एप्पल आईडी बताना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल इट, राइट? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आप यहां से गेट करोगे एंड इंस्टॉल पे इट इज आस्किंग योर एप्पल आईडी, राइट? Meanwhile, I'm jumping to this place. We are downloading this Android Studio. Meanwhile, I just click it here. और यहाँ से it is asking for, so I just do dismiss this message. और यहाँ से मैं इसे scroll करता हूँ and it is accepting this. और यहाँ से it is asking for just accept, agree this, and we are using Mac with Apple chip. तो यहाँ से Android Studio भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, राइट? सो इट इज डाउनलोडिंग इट. So meanwhile, we have download this Google Chrome. So I just click it here. So the Google Chrome will be get installed, right? तो यहाँ पर से हमारे पास Google Chrome install हो जाएगा from this place, right? Once this Google Chrome is installed, then we install this Android Studio. तो यहाँ से हम Android Studio को भी, so it is just downloading it. It is near to 1.1 GB. मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ Google Chrome पे, here it is. और यहाँ से इसे ड्रैग कर देते हैं इन अवर एप्लीकेशन फोल्डर. सो दिस विल बी गेट इंस्टॉल्ड. तो क्रोम इज ऑल्सो इंस्टॉलिंग एंड इट इज मूविंग टू द एप्लीकेशन. तो क्रोम भी हमारे पास आ गया. इट मीन्स वी कैन टेस्ट अवर एप्लीकेशन ऑन क्रोम ब्राउजर. और वी नीड एन एंड्रॉइड स्टूडियो. तो हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड हो चुका है एंड वी क्लिक इट हेयर. तो इट इज गोइंग टू इंस्टॉल इट. तो यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो को भी ड्रैग कर देते हैं अपने एप्लीकेशन पे, राइट? So Android Studio will be also installed in this application. और ये now it has become double in size. Around 1.1 GB का हमारे पास आया था और it is taking 2.68 GB. तो ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा. So here it is. तो Android Studio भी अपने पास सेटअप हो गया है. Now the thinking is कि हम Android Studio पे एक बार जाते हैं, ओपन करते हैं इसे Android Studio को. So from here, from the launch pad, we have an option of Android Studio. Here it is. तो इस पर क्लिक करते हैं and it is going to open up this Android Studio. Alright, इसे ओपन करते हैं. तो यहां से हमारे पास Android Studio ओपन होता है एंड इट इज आस्किंग अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पहले से कोई प्रोजेक्ट्स बने हो इस मशीन पे. वी डू नॉट हैव, सो डू नॉट इंपोर्ट द सेटिंग्स. ओके, तो यहां से इट इज सेइंग इफ any somehow Android Studios get crash, so you want to send those usage statistics, so we'll say send it. और फ्रॉम हेयर इट इज सेइंग कि मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो पे जो बेसिक सेटअप है वो हमें करना है. सो वी नीड टू चूज द स्टैंडर्ड. और इट इज आस्किंग फॉर थीमिंग. सो आई जस्ट प्रेफर डार्क थीम. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ लाइट थीम, सो आई जस्ट प्रेफर दिस डार्क थीम. इसे भी नेक्स्ट कर देते हैं. एंड these are the things. It is just verifying it for installation. Then click on this next. And I accept this thing.
एंड ऑल्सो एंड्रॉयड SDK ARM बेस्ड लाइसेंस, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिनिश इट. सो वट एवर द इंस्टॉलेशन इज लेफ्ट, जो भी इंस्टॉलेशन लेफ्ट रही होंगी वो सब अब इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी. So it is install this required dependencies. Click on this finish. Okay. Now it is ready. अब अगर हम यहाँ से देखें तो it is showing this more options. यहाँ पर हमें देखने शुरू हो रहे हैं more options का option, and from here, just a second, showing this more option, and we have this option called SDK manager or virtual device manager. Let's say I just choose virtual device manager. So it is showing कि यहाँ पर मेरे पास there is a one phone is already available. So I just choose this create a device, and from this create a device, just choose Pixel 5. And from here, I just click on this next. And from this next option, all right, just a second. It is saying API 34 is there already. तो मैं कोई और इंस्टॉल नहीं करना चाहता एंड्रॉयड का API 1, एंड आई क्लिक ऑन दिस फिनिश. और हेयर इट इज. तो एक मेरे पास डिवाइस एमुलेटर विल बी हेयर नाउ. इसे यहां पर से क्रॉस कर देते हैं. इट इज नाउ हेयर. इसे भी यहां से क्रॉस कर देते हैं. नाउ इट्स डन फ्रॉम हेयर. अभी हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है. नाउ वी आर जंपिंग बैक टू अवर टर्मिनल, एंड फ्रॉम द टर्मिनल ऑनवर्ड्स वी डू वन थिंग. यहां से मैं एक कमांड टाइप करता हूं. दिस वन इज, वी टाइप इट हेयर फ्लटर, राइट. इसे मैं थोड़ा सा ऊपर सेटल डाउन कर देता हूं. तो दिस वन इज Flutter, and in this Flutter we specify this as Flutter Doctor again, and it is scanning everything. So it is going to scan all those dependencies. So it takes some time. So if we see it here, तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पास required dependencies इंस्टॉल हो गई हैं, बट इट इज सेइंग देयर आर टू इश्यूज. वन ऑफ द Xcode, अगर हम iOS डेवलपमेंट करना चाहते हैं देन वी नीड Xcode, बट वी नीड अ फ्लटर एंड्रॉयड लाइसेंस. तो इसको यहाँ से टिक करना है. एंड इट इज ऑल्सो सेइंग it need to install command line tool component is missing. तो we need to install this command line tool components. ये हमें मिल जाना चाहिए from the Android Studio. तो we jump to this Android Studio setup. Here it is. ये installation इसकी हो चुका है. We just close this thing and we jump back to this Android Studio. Right, I think it is get close. तो मैं यहाँ से Android Studio choose करता हूँ. It is going to open up here. This Android Studio is here, and from here we choose this again, this more actions, and from here we have this option called SDK manager. तो मैंने यहाँ पर SDK manager option choose किया, and from the SDK tools it is telling us there would be Android SDK command line tools. So this one is the latest one, right? So either you can choose the latest one, और यहाँ से हम show package करके we are able to see SDK tools. So there are plenty of options are there, but this is, I think it is for the build tools. इसे मैं इसे collapse करता हूँ इसे भी, और यहाँ से आप देखोगे तो there are option 9.0 is the latest one, 8.0 is there. तो आप based on your Java installation, I mean whatever the Java you have, based on it you can choose it. So अगर मैं यहाँ से टर्मिनल ऑन करता हूँ, लेट्स से आई एम जस्ट ओपनिंग दिस टर्मिनल, और फ्रॉम हेयर आई जस्ट क्लियर एवरीथिंग. लेट्स से आई क्लियर दिस थिंग, और यहाँ से आई एम जस्ट चेकिंग आउट जावा हाइफन वर्जन. तो विच वर्जन आई हैव? इट इज सेइंग जावा 20 आई हैव राइट नाउ. सो इवन आई कैन चूज द लेटेस्ट वन. अगर मेरे पास कोई पुराना वर्जन होगा, सो आई नीड टू जस्ट चूज 8 और 7 whatever. सो आई टिक दिस वन विच इज द लेटेस्ट वन, और यहाँ से आई हैव जस्ट टू अप्लाई दिस चेंजेस. तो ये इसे इंस्टॉल करेगा. ओके करते हैं, एंड इज गोइंग टू डाउनलोड दिस थिंग, और हमारे पास दिस SDK कमांड लाइन टूल विल बी गेट इंस्टॉल्ड. हियर इट इज डन. तो इसे करते हैं क्लिक फिनिश. इट इज डन नाउ, एंड आई डू दिस अप्लाई हियर. ओके कर देते हैं इसे. नाउ दिस इंस्टॉलेशन पार्ट इज डन. अब वापस जाकर मुझे चेक करना होगा कि इज दिस फ्लटर डॉक्टर इज सेइंग
द करेक्ट थिंग। तो अभी फिर से स्कैन करेगा हमारी मशीन को एंड देन इट इज चेकिंग कि इट हैज टू इश्यूज, इट इज टेलिंग अस देयर आर टू इश्यूज। अब वो कौन कौन से टू इश्यूज हैं, वी जस्ट स्क्रॉल इट अप and it is saying Xcode, that right, it's perfect. And the only issue right now is this Flutter Doctor Android license. तो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को एंड वी नीड टू जस्ट रन दिस कमांड। इस कमांड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। फ्रॉम हेयर आई जस्ट टू पेस्ट दिस थिंग। सो दिस इज द कमांड, प्रेस एंटर। तो इट इज स्कैनिंग इट और इट इज आस्किंग फॉर एक्सेप्ट द लाइसेंस। सो yes, every time we are just doing this yes option and here it is। और फिर से इसी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करते हुए जस्ट फॉर द डॉक्टर अगेन। नाउ दैट ऑप्शन रिलेटेड टू द एंड्रॉइड विल बी गॉन, राइट। तो अगर मैं अब इसे स्क्रॉल अप करता हूं तो ओनली द एक्स कोड ऑप्शंस आर लेफ्ट, बाकी सब चीजें परफेक्ट है। नाउ इट इज वी हैव डन विद दिस। अब मुझे से रेडी हो गया मेरे पास मशीन। नाउ वी आर सेइंग कि अभी वीएस कोड के लिए भी चलने लायक हो जाए। सो फ्रॉम हेयर वी नीड अ VS कोड इन आवर मशीन। तो VS कोड आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। VS कोड इज बेसिकली द कोड एडिटर। तो VS कोड डाउनलोड एंड फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड इट। इन माई मशीन आई हैव दिस VS कोड। तो अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सो आई हैव दिस VS कोड ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ से इसे ओपन किया, दिस इज द VS कोड एंड आई जस्ट क्लोज ऑल दोज थिंग्स। यहाँ से मैंने ये जितनी भी चीज़ें थी इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ दिस थिंग इज ओपन। अभी यहाँ से ओके वी आर डूइंग दिस एक्सटेंशंस पे जाते हैं एंड फ्रॉम द एक्सटेंशंस वी नीड एन एक्सटेंशन कॉल्ड डार्ट एक्सटेंशन। तो यहाँ से डार्ट एक्सटेंशन चूज करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड, so we need to just install this Dart extension. And also we need another extension to be installed, that is the Flutter extension. So we look up for the Flutter and install it. अभी दोनों एक्सटेंशंस हमारे पास आ गई हैं। नाउ वी आर रेडी फॉर अ डेवलपमेंट। तो यहाँ से ओपन फोल्डर को बंद करते हैं। सो वी क्लोज दिस फोल्डर एंड वी स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ से अपना पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी, आई एम सेइंग कमांड शिफ्ट पी बिकॉज वी आर ऑन द बैक। तो कमांड शिफ्ट पी किया एंड इज गिविंग दिस ऑप्शन फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एंड फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट यू चूज एप्लीकेशन चूज करते हैं यहाँ से। टेक सम टाइम। इसे मैं दोबारा से एक बार ओपन कर लेता हूँ। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट and the application option, right? So in this application option it is showing us it is showing here कि जो मैं application यहाँ से बनाना चाहता हूँ where I want to create it. So in the documents folder I will choose a new folder। मैं एक नया folder यहाँ पर बनाया था and this new folder I will give a name here। तो यहाँ पर से हम उसका एक name दे देते हैं and this name we are saying my codes। तो यहाँ माई कोर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। वी जस्ट सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड इनसाइड इट वी आर सेइंग दिस इज अवर फर्स्ट ऐप। तो आई जस्ट गिव अ नेम कॉल्ड फर्स्ट ऐप और वो यहाँ से इस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो इट इज क्रिएटिंग ऑल दोज रिक्वायर्ड स्टफ हेयर, राइट। तो ये स्टफ मेरे पास आ गया, राइट। सो दिस होल एंटायर पार्ट विल बी हेयर। कोड यहाँ पर आ गया हमारे पास जनरेट होके। नाउ वी वांट टू रन दिस थिंग। तो इसे रन करने के लिए सैम्पल एप्लीकेशन को भी प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी अगेन एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट टाइप फ्लटर। तो मैं यहाँ से फ्लटर टाइप करता हूँ एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड लॉन्च एमुलेटर एंड फ्रॉम द लॉन्च एमुलेटर आई जस्ट चूज पिक्सल 5 और यहाँ से इट इज गोइंग टू ओपन द एमुलेटर। तो यहाँ से वो एमुलेटर को ओपन कर देगा एंड हेयर इट इज, दिस इज द एमुलेटर विच वी हैव। So this emulator will be get open. So it is going to boot up and once this emulator will be get open, जैसे यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, इट इज गेट बूट अप। उसके बाद हम इस पे क्लिक करके रन कर सकते हैं अपनी वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसे बूट होने देते हैं, इट टेक सम टाइम। मीनवाइल दिस इज द कोड विच इज प्रोवाइडेड एंड दिस इज द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया है। तो आइदर वी कैन रन अवर एप्लीकेशन ऑन एमुलेटर और आइदर वी कैन डायरेक्टली रन ऑन रियल डिवाइस, राइट। तो हम अपना जो भी हमारे पास मोबाइल केबल है उसे लगाकर we can connect it and then we can run our application on that real device as well as. So here it is, our application we need to run.
So main में जाके we have option of run. So when we click on this run option, right? So when we run this option, so here at the bottom, it is showing this debug console and it is going to run our application on phone. तो phone पे हमारी application को run कर देगा. It takes some time because it is going to install all those required things on phone. तो यहाँ हम phone को भी on करके छोड़ देते हैं. So this is the phone area जहाँ पर हमारे पास दिखेंगी चीजें. Meanwhile, it is starting our application. Once the application is up there, तो हम यहाँ पर से उसे देख पाएंगे. So it takes some time. So finally your application is up and running. और यहाँ पर this is basically a counter application and you can click it and the counter will be get incremented. So the point is your Flutter is get set up and your application is up and running. So we have learned how to set up your Flutter on Mac machine.